बोले हम लोग पशु है नहीं क्या? अभी हम लोग So now ने श्रवण किया we heard ये मनुष्य जीवन को कैसे हम how can our human life, how can we मनुष्य जीवन के कैसे हम our human life, we, हमारे वेद में कहा जाता है पहले मनुष्य बने, like how can, that's why the Vedas explain, first we have to become a human being. है? वेद में क्या बोला? What's Veda saying? पहले मनुष्य, First become a human being. बोले हम लोग First. पशु है नहीं क्या? So we are animals or what? वेद में कहा गया क्या बनो? So what? क्या बनो? What should नाम बता become? दो। हाँ? What's your name? अनिल, Anil. मनुष्य बन। First you have to become a human being. तो हम लोग क्या पशु है? So what? Are we animals or what? शास्त्र में कहा जाता है Shastra जो explains. हरि भजन नहीं करता Those who don't do Hari Bhajan, वो पशु है। they are animals, yes. है तो मनुष्य के भांति, They are like human दो beings हाथ, with 2 hands पैर, and 2 legs. है, किंतु काम करता है But क्या? actually, what do they do? पशु का। Just like animals, they do गधे things की like भांति, animals, हाँ, like they work like a गधे donkey. माता That's why अनेक Bhaktivinoda Thakur says, working as like a इस donkey. संसार के लोग The people of this world, गधे के भांति they are दिन रात क्या करता है? day and night just परिश्रम करता है। working hard like a donkey day and night. किंतु देखो गधे के मालिक जो है गधे को खाना पीना नहीं देते। But you see, the owner of the देता है? donkey does not give food nor drink, like nor water, to the donkey. The owner of the donkey does not feed his own donkey. उसके सारा दिन क्या करता है? So उसके whole day the पीठ donkey पर is taking heavy load on his back for the owner, right? The donkey is carrying like bricks or other things. बोझ लेके Anyway, a heavy weight for the owner. और रात के समय क्या करता है? And during the night, the donkey, रात को क्या करता है? what does he do in the nighttime? लात मार कर उसको भगा देता है। The owner of the donkey beats the donkey and makes and like tells him to go away, like beats him and put him aside, like, oh, go away, like this, making him running away to leave, you know. बाजार में है ना, वो घूमता रहता है, दो चार And then the donkey has to go to the market to find some food, and कागज फागज इधर उधर खा करके पेट भर करता है। the donkey eats something like maybe some paper or something he finds on the ground or something, and then he fills his stomach like this, eating anything. और देखो यहाँ तक भी गधा ऐसे मूर्ख है। So the donkey is so foolish that गधी के पीछे जो है स्त्री का दी ना, उसके पीछे दौड़ता रहता है सुख भोग के लिए। the donkey is running behind the donkey. Donkey is running behind the she monkey. Sorry, it's not she monkey. She donkey. The donkey, male donkey, is running behind the she donkey to fulfill his senses gratifications, his sexual desires. ऐसे मारता है। But the she donkey, she with her hind legs, she's kicking so much the he donkey at his face that the he donkey, his face is bleeding. तब वो उसके पीछे ही दौड़ता रहता है। But still he's running after her, after the she donkey, isn't it? ठीक उसी प्रकार So in the same way, that's why Shastra explains that the people of this world who don't do Bhagavad Bhajan, they are like animals, जस्व आत्म बुद्धि कुनोपे सिद्धार्थ, like donkeys. जो लोग केवल एक मरण से शरीर को जो आत्मबुद्धि रखते हैं, Those who think that this body, that is this body, those who think that this body which is subject to death, it's their real soul, or who they really are, they are like animals. त्रिधातु के एक बात कफ पित्त के द्वारा ये शरीर, और उसी की This body is made of kapha, bata, pitta. Those who, so some people think that this body is the real self. आत्मा पुनः सिद्धार्थ के सौदी कलत्रादि भूमि यदि अपने पुत्र कन्या आदि पालन पोषण में वो रहता है। So, and you are only absorbing feeding your family and sustaining your family.
अपने भोग में नहीं पाते। So you cannot even use वही for your बात, own self. अपने परिवार जनों के पालन पोषण करने में वो लगे रहते हैं। Like you cannot, अंत में वही पोषण करने में वो करता है, अपने करना आदि पालन पोषण में वो रहता है, पैसा इकट्ठा करता है, अपने भोग में नहीं कर पाने। so you earn money, but you cannot even use your own money for yourself. For your own self, you know, you use the money you earn, you use for maintaining or like you know, sustaining your family. नहीं पाते। वही बात, अपने परिवार जनों के पालन पोषण करने में वो लगे रहते हैं। Just to keep your family, you are अंत में वही earning, उसको क्या करते working हैं? hard and earning money. लात मार के भी भगा देते हैं, Then they also will, कष्ट देते हैं। then they also will beat you and kick you out. They give you so much also suffering or disturbance, your family. देखो मूर्ख कैसे है। So how foolish. इसलिए शास्त्र कहते नहीं भाई ये So the Shastra छोड़ो, says, भगवान oh no, को my भजन brother, give up this everything and do Bhagavad दो चार Bhajan. कीर्तन कर लिया, ये भजन थोड़ी है। Do you think to do bhajan is just to do 2 or 4 kirtans? हाँ, अरे सुनो तो, Oh, रामायण listen, में जो राम बना, मैंने उस दिन कहा था ना, that they are told देखो that राम क्या बोले, रामानंद सागर Ramananda Sagar, the director, रामायण बना था, he did that Ramananda TV, sorry, Ramayana TV series and the television. और उसकी रामचंद्र जो अभिनय करने लगे, So who was the actor of Ramachandra in that Ramayana? Who was the actor of Ramana? अरुण गोविल The actor of Ram was Arun Gobil, his name. है, और सीता कौन थी? And who was the actress of Sita? Deepika. है, सब जानते हैं। You know everything, और huh? देखो साथ ही साथ घर घर में Then उनकी चित्रपट when the TV series on air, like when they were like broadcasting, at that time in everyone's houses, you could find the picture of these 2 actors, like Ram and Sita. लगा करके लोग पूजा करने लगे। People were even worshipping their pictures of these actors posed as Ram and Sita, ये भगवान thinking that he was God. सादी राम है, Oh yeah, he's directly Ram and she's directly Sita. है, उसको देखने के लिए हजारों लोग भीड़ कितने जमा गए। And so many people, they used to gather, like they used to crowd them, like surround them, like, you know, like fans, you know, like making them like an idol, like an idol. So wherever they went, so many people were around them, near them, like gathering to be able to see them. किंतु वो संगी भजन नहीं करते। But themselves, these actors, they are not doing bhajan. No. तो राम बने थे, This who was Gobil, Ram, this और जो Arun सीता Gobil, बने, and this Sita, वो क्या करते? कुछ नहीं करते। they didn't do any bhajan, nothing. किंतु वास्तव कोई कीर्तन करने जो भजन करे ये नहीं होता है, खड़े होकर के कीर्तन कर। So only if you're like doing some kirtan, for example, standing and doing kirtan, this is not enough for meaning that you're doing bhajan. थोड़ी होता, अपने जीवन में आचरण करें, You have to follow the behaviors in your life. है, आचरण करना पड़ेगा, भजन करना पड़ेगा। You must do the acharan, means you must follow the behaviors, the good behaviors in your life, and also the bhajan also. किसने माला जप किया उसको पूछो, So ask who was chanting. कितने देव देवी जपमाला किया, घर में देव देवी है, Do you have a demigod or demigoddess in your house? Do you do worship of आज demigods? क्या पूजा है करेगी? Nowadays they're worshipping what? हाँ? आज कौन सा है? Today is which day? अरे शुक्रवार है, Today is देखो घर Friday. संतोषी माता, Friday. कितने So माता की पूजा करते so हैं, many mothers they worship उसके पता ही नहीं है some what they worship. Sorry, I couldn't get the name. आज क्या पूजा है करेगी। So on the Fridays they आज generally कौन सा है? worship the. अरे शुक्रवार है, देखो घर संतोषी माता लेकर के कितने माता की पूजा करने लगी। So they worship Santoshi Mata and many other matas. They worship people. Not I told before the ladies worship. No, the people worship this Santoshi Mata and other matas, other like goddesses. They worship on Friday उसके पता ही नहीं है, because people don't know. है? 7 दिन में 7 देवी के वो पूजा करते रहते। So in each of day of the week, they worship one different devi, one like goddess. शनि देव क्या बोले, Goddess. रविवार से किसको सूर्य देव की पूजा करते हैं, हैं? सोमवार के किसकी पूजा करते So who they worship on Sunday? Who they worship on Saturday? हैं? महादेव की पूजा करते हैं।
मंगलवार को हनुमान So की on Monday they worship Shiva. पूजा करते हैं। सोमवार को किसकी पूजा करते हैं? So महादेव की पूजा on Monday they worship Mahadev, Shiva. करते हैं। On Tuesday मंगलवार को they worship to हनुमान के चालीसा। Hanuman. They read it Hanuman बुधवार Chalisa. को कौन सा रह गया? On Wednesday, हाँ? it's a holiday. छुट्टी नहीं हो, पूजा करते No, Wednesday also they do worship. हैं। हाँ, हाँ? अच्छा चलो गणेश जी की पूजा करते हैं। Okay, Ganesh, they worship बृहस्पतिवार Ganesh. को लक्ष्मी जी, शुक्रवार को So when Thursday Lakshmi and संतोषी मैया, Friday Santoshi शनिवार को- Maya and Saturday Shani Deva. है तो कहते मैं तो ब्रज में जन्म लियो So the person says, I was born in Braj. है, किंतु ब्रज के जन्म लेने से तो नहीं होता, But it's- शरीर के साथ। It's not enough only to be born in Braj. It is only your body. ब्रज में जन्म लेने से उसके ब्रजवासी नहीं कहा जाता You cannot है। be इसे called समझो। a Vrajavasi just because you were born in Braj. Try to understand this very carefully. है? कुत्ते से लेकर के सुअर आदि सब ब्रज में तो जन्म लिया। Also, dogs and also hogs. They were also born in Braj. अरे, मुसलमान गाय को काटने वाले, Even the Muslims also. ब्रजवासी। Who kill cows, even they kill cows. Muslims, they also will say, oh, they are also born in Braj. You know, वो ब्रज में जन्म लिया कि नहीं लिया? they also took birth in Braj or मुसलमान लोग not. रहते अगल बगल में कहीं, There are some Muslims living near you, and they also say they are Vrajavasis. तो उससे ब्रजवासी नहीं कहा जाता है। This is not actually Vrajavasi. भाव होना Vrajavasi is somebody who has the mood of Vraj. जैसा अभी बताया ना, देखो ब्रजवासी लोग किसको कैसे Like he रहते told, how the Vrajavasis they stay. हैं? गोपालन करते, गाय को पालते थे, They used to take care of the cows दूध काटते थे, and milking the cows and singing. दामो धर्माधवेति, गोविंद दामो धर्माधवेति, गोविंद दामो धर्माधवेति, गोविंद दामो धर्माधवेति। हे कृष्ण हे यादव हे सखेति, गोविंद दामोदर माधवेति। ब्रजवासी उसको कहा जाता है किसको? So, बोले a Vrajavasi is someone who रागो परम अभिष्टा भवेत, सर्वाय तो भवेत सा रागात्मिका कविता है। ब्रजवासी उसे कहा जाता है कृष्ण के नित्य परिकर जन, रागात्मिक जन, उसके ब्रजवासी कहते हैं। So the Vrajavasis, they are the eternal associates of Krishna. सदा सर्वदा कृष्ण में अभिष्ट होकर रहते हैं They are always absorbed in Krishna. और कृष्ण अलावा और किसी को स्मरण नहीं करते। And they don't remember anyone else विपद except हो, for आपद Krishna. हो, कुछ भी हो, किसके स्मरण करते हैं? So in the distress or happiness, they only remember Krishna. कृष्ण कृष्ण महाबाहु, हे कृष्ण हे महाबलवान Hey कृष्ण, Krishna, so powerful आप Krishna, हमें रक्षा करें। protect us. जहाँ जहाँ पर विपत्ति आपत्ति आ जाए, So in any ब्रजवासी distress, the लोग Vrajavasis, किसको पुकारते थे? they only called to Krishna. देखो भंडीवन में हम लोग उस दिन गए थे। So that day we went to Bandirban maybe 3 or 4 days ago. उस उधर जो मुंजा ऑटो भी है, मुंजा समझते कि नहीं? So there's a munja बड़ी बड़ी there. लंबी लंबी It's a घास जैसे हो जाते हैं। munja is one kind of मुंजा grass. घास कहते हैं ना, People eat like munja grass, one kind of plants, very long. कहते हैं। देखो उसमें क्या हुआ, गर्मी के समय था और सखा लोग So there- वहीं पर बैठे, कृष्ण घास कहते हैं ना, मुंज कहते हैं। Munj, people Huh? eat. Some देखो kind of उसमें plants. क्या हुआ, गर्मी So के समय था it was और summertime, सखा लोग वहीं पर बैठे and the friends कृष्ण of के Krishna, साथ। they were sitting with Krishna. और इतने कम And- से के उन्हीं और देखा A messenger जब of सखाओं के साथ Kamsa, a कृष्ण servant of उनके गाय सबको Kamsa, मैं saw Krishna and his friends, जला and करके he राख thought, करके oh, सब भक्त कर देते। I will kill all the friends इसलिए of Krishna and चारी Krishna, तरफ like मुंजा burned by the मुंज के जो है fire. घास जो है So this सूखी हुई थी। munja grass, like these plants that filled with this grass, it was very dry, so much वो dry. क्या कर दिया, So this आग लगा दी। demon, servant और of Krishna, आग लगाने- Kamsa, like the servant of Kamsa, he put fire in this
Munja grass field. के साथ ही साथ आग जब लगती है ना, हवा भी तेज हो जाती है उस So समय। at that time it was जैसे अब also हवा so नहीं चल much रही है, पर आग लगे wind. देखो, तेज So- हवा बहती है और चारी तरफ So because of फैल the गया winds, this fire है, हवा भी spread, जोर से और spread. चारी तरफ भागने का कोई everywhere. रास्ता नहीं है। There was no place to Eh? run. इधर सखा लोग क्या करने लगे, सखा लोग रोने So लगे, the हम कहाँ Sakas जाए, started किस तरफ crying. जाएंगे? Where will you हैं? go? इतने विशाल जो मुंज के जो So जंगल it was जैसे है, a jungle of munja चारी grass. तरफ आग And लगे, लपट कर जल्दी कर if everywhere they were surrounded by big तो flames सखा of लोग fire. रोने So the क्या Sakas करें? started crying, what to उस do? समय सखा लोग देखो, And then the Sakas- काली मैया, दुर्गा मैया, So संतोषी मैया, this Kali इसको नहीं Maya, पुकारा। क्या the Sakas at this moment, they did not cry for the help of Kali Maya, Santoshi Maya, Durga Maya. No, they cried for the help of बोले, कन्हैया तुम रक्षा करो, Kanhaiya, हैं? protect us. गोविंद दामो धर्माधवेति, गोविंद दामो धर्माधवेति, हे कृष्ण हे जादव हे सखेति, गोविंद दामोदर माधवेति। है हाँ समझिए, तो ब्रजवासी Understand? इसलिए कहा जाता So है this is a Vrajavasi जो एकांतिक रूप में who एकमात्र is कृष्ण में one ही pointed मन to के रखते हैं। Krishna वो कोई only. काली शिव दुर्गा को आराधना नहीं करते। He's not worshipping इसको Kali, समझो। Shiva, Durga or something like that. Try to अपने के understand कह it. दे हम हिंदू है, You say you're Hindu, गर्व से कहो हम you say हिंदू proudly, you say I'm Hindu. है, कहने से थोड़ी हो जाता है। Do you think it is enough? 65 इंची छाती दिखाने से थोड़ी हो जाता है क्या? हिंदू के जो Being proud and like puffed up. कर्तव्य जो है उसका The duty आचार आचरण जो है, of उसको a दिखाना तो पड़ेगा Hindu. नहीं। You should see how is the Eh? behavior मैं गर्व से behavior कहो, of the Hindus and follow हम that. हिंदू है। I proudly you say I'm a अरे Hindu. हिंदू के जो लक्षण जो है चोटी रखना पड़ेगा। Okay, but every Hindu should have choti, हाँ, should गले have a में- sika. You know the hair, the men should have that small hair in the back of the head. You know the choti, the hair on top of the head, the sika. So every Hindu should have that, and also on the neck they should have कंठी माला रखना kanti पड़ेगा mala also. और राम और कृष्ण नाम जप करने पड़ेगा, तब तो हिंदू हो And chant Krishna Nam, then you are Eh. Hindu. नहीं तो केवल लिख दिया, Otherwise, जो you आपको just लिख देते wrote हैं, in the गर्व wall. से कहो By हाँ, proud you say, proudly हम you say हिंदू I'm a हैं। अरे Hindu. हिंदू किसको कहा जाता है? So what is a Hindu actually? सनातनी है? सनातनी किसको कहा जाता है? What is a Sanatani? धर्म पालन करो, Somebody who follows the Dharma. Eh. You know Sanatana Dharma. सनातन धर्म Sanatana Dharma. सदा तनति विस्तार से जो धर्म जो है, जो नित्य जो है, A person who is उसको always, सनातन कहा जाता है। you know, हमारे Sanatana means वेद, also पुराण, eternal. उपनिषद, Means the श्रीमद् culture भागवत, of the Veda Purana Srimad इसी की कहते Bhagavatam. जा रहे हैं This thing कि सनातन is किसको कहा जाता Sanatana. है। What is यद्यपि Sanatana? अभी कहीं शास्त्र में आपको हिंदू शब्द नहीं मिलेगा, Actually, the word Hindu, you'll not find in any Shastra, you cannot find these words. किंतु सनातन शब्द आपको But you can find the word Sanatana. है, ऐसा नहीं, गीता में Understands? कहा गया And Gita explains. मामैवांश जीव लोके जीव भूत In the Gita, we see this सनातन explanation. शब्द है। जीव सनातन है, Jiva is Sanatana, हिंदू Jiva is शब्द आपको कहीं नहीं eternal. मिलेगा। But you चलो, never find anywhere the अपने word हम मान Hindu लेते in the हैं, Shastra. But still, गर्व से okay. कहो हाँ, Proudly you say, nowadays people say, no, I'm हाँ, Hindu. असली Proudly. हिंदू शब्द कहाँ से आया? Actually, this word ये विदेशी जो Hindu है, came from the Western countries. सिंधु नदी के तट पर जो आर्य लोग वास करते थे, Those जो ब्राह्मण Arya- लोग रहते थे, Like the Arya people, like Brahmanas or like these people from Arya, Arya lineage, let's say like that. The Aryas who used to live near the river Sindhu, they are called Hindus. वो लोग ह के जो है वो उच्चारण कर नहीं पाते, because they could not pronounce the Eh. h, these sounds. ब्राह्मण लोग रहते थे, वो लोग So these Brahmanas हाँ living के जो near है वो उच्चारण कर नहीं the पाते, river Sindhu, Eh. these Videshis, these Westerners, Sindhu they के could स not के ह pronounce करते थे। the Eh. h sound. Sorry, they couldn't pronounce the s, Sindhu. So that's why they started saying Hindu instead of इसलिए Sindhu. उस समय हो गया सिंधु नदी के तट पर जो आर्य लोग वास करते थे, So जो the, ब्राह्मण लोग so the रहते थे, Brahmanas used to live near Eh, the वो river लोग- Sindhu. ह के जो है वो उच्चारण कर नहीं पाते थे, है नहीं, सिंधु के स के ह So करते the थे। s from the Eh. Sindhu, they used to इसलिए say उस समय हो गया h, सिंधु नदी Hindu. से That's why the क्या Westerners कहते living the other side of the हिंदू river. शब्द है। So they started crying, अच्छा चलो कोई भी calling कहें, Sindhu तो by हमारा दोष Hindu. है, इसको तो मान लेते हैं, Okay, we किंतु accept, okay. सनातनी बा हिंदू धर्म जो But कहते the हैं, Sanatana Hindu Dharma, इसके एकमात्र क्या है? सनातन पुरुष कौन है? who is Sanatana Purush? स्वयं भगवान Is कृष्ण God, Bhagavan Krishna. है,
इसलिए मैंने किसलिए कहा, देखो ब्रजवासी सखा लोग क्या कहने लगे, So the Vrajavasis, what did they do? कृष्ण कृष्ण महाबाहु, They started saying, हे Krishna, कृष्ण, with हे गोपाल, big arms, Krishna protect us. है। और उस समय कृष्ण ने क्या की, And कृष्ण विचार Krishna करने लगे, देखो thought, मैं आग के पार पी लिया, if I drink तो the ये लोग fire, सब माँ के पास जाकर के they will go to their mothers शिकायत करते, and they will इसलिए complain कृष्ण ने about me बहुत कड़ा है, later. कृष्ण कहले गोपाल, कृष्ण कहले सखा, Not complain, they सब will, आंख बंद करो, I forgot how to say in English, they will, 1 second, translation. Okay. They will tell on me to my mother. They, like Krishna is saying, if I drink the forest fire in front of them, they will tell on me to my mother. Okay, tell on me. Tell on me to my mother. Also another word, they will tattle on me to my mother. Another word, they will snitch on me to my mother. Sorry, many synonyms, just meaning that the Krishna's friends, they will come to Mother Yashoda and then they will tell, oh, Krishna did this, did that, Krishna drank the forest fire. They will tell what happened to the mother of to Krishna's mother, you know? They will tell. है। तब सारी सखाओं ने क्या की, आंख बंद कर दी। So Krishna told the friends to close their eyes. और गोपाल ने क्या की, सारे आग को, And then Gopal had drank all the forest fire. और कृष्ण बोले अभी आंख खोलो, And Krishna देखा क्या कोई opened his eyes and he saw no fire. मैं इससे Sorry, कह रहा the था, friends opened their eyes and didn't see any fire anymore when they opened their eyes. So I was saying that the Vrajavasis in happiness and distress, गोपाल छोड़ करके, कृष्ण छोड़ करके किसी की पूजा नहीं करते, they don't worship anyone besides Krishna. ब्रजवासी, इसलिए मैं कहने देर से थोड़ी हो जाता है, मैं ब्रजवासी। So it's not only by saying I'm a Vrajavasi or anything like दल में that. चले जाते हैं उसी के कीर्तन करा शुरू कर देते हैं। Then you go to some people, like you go to different groups, and whenever you go to a different group, you just mix along, like get along with them and mixing together. For example, you came here with the Vaishnavas, और पल्ली पार कीर्तन कर देंगे, and then you do kirtan so much. But when you go to some people worshiping Maya, the Devi, also you also do many things for the Devi. थोड़ी वो हो जाता है। समझ में आ रही है? Do you understand or not what I'm saying? इसलिए एक ही को आराधना So we करो। should worship only one. Who? Govinda. कन्हैया छोड़ करके, Kanhaiya, no one else. इसलिए हमारे That's why Bhaktivinoda Bhaktivinoda Prabhupada says, जो लोग जिस दल में जाते हैं उसी दल में मिल जाते हैं। those people who go to different groups and just get along and mix with them, like when you go to a different group, you just stay with them and like also having their association with different groups. These people are called Karjatiya. खरजटिया समझते हो? Karjatiya. Do you know what is Karjatiya? हैं? माने जिस दल में जाते हैं उसी में मिल जाते हैं। When you go to a different group, you just like get along, mix along. I don't know if this word exists. Like mix along, you just like you blend along. I don't know. Like you mix with them and you just do whatever they're doing, no problem. And then they'll go to a different group the next day, and also you do the same what another group is doing, like that. मायावादी में जाते हैं। So you go to the Mayavadis, Advaitavadis, तुम ब्रह्म हो। and then they tell you, oh, you are Brahma, and you say, oh yeah, I'm Brahma. Then you come to the Gauriya Mata, and you say, oh, I'm the servant of Krishna. हैं? समझ में नहीं? Understand or not? ऐसे नहीं, वो ब्रजवासी नहीं थे, वो बेकार है। No, this is useless. You cannot be a Vrajavasi like that. Actually, it is useless. Try to understand. गोविंद के भजन करो। Only worship Govinda. ये तो इसी के संस्कार में लेकर के आना है। So we have to have this kind of samskara, impressions or habits or rituals, or only worship Bhagavan. So worship Giriraj, for example. Who's the worshipful deity of Vraja? Bolo Giriraj Maharaj. उसको था बोले, हैं? So the devotee told Maharaj the other day we were speaking some Harikatha about I couldn't listen everything that day. You were speaking about Radha Kunda. I couldn't listen everything. राधा कुंड की कथा इस प्रकार है, संक्षेप में बताता हूँ। So I'll tell you briefly. Have you offered the deity? Is already late. एक बार कृष्ण Once Krishna अपने सखियों के साथ जो है
उस स्थान पर खेल कूद कर रहे। He was playing with his Hey. Sakhis, friends. हाँ समझिए, उसके गांव के नाम है क्या? The name of that हरित गांव village था। is called क्या नाम? Arit Gaon. हरित गांव, Harit जहाँ पर Gaon, वरिष्ठ सुर का कृष्ण ने वध किया। where Krishna killed the demon Aristasur. इसलिए उस गांव के वास्तव नाम है क्या? गांव क्या गांव बताया? हरित गांव है, जहाँ पर वरिष्ठासुर ने वध किया। तो एक समय के Where Aristasur was killed. एक कंस के एक जो है And then दूत जो है उसके नाम था वरिष्ठासुर। the वरिष्ठासुर क्या था? वो like a बहुत messenger बलवान or a demon of Kamsa was called Aristasur. He was a very powerful demon. था। अपने तंत्र मंत्र आदि के द्वारा With his tantras and mantras, he could manifest many forms. वो कंस के बोले मैं जाता So he हूँ told to Kamsa, I और will go सारे to ब्रजवास के Vrindavan ध्वंस कर जाऊँ। and I will destroy all the और Vrajavasis. उन्होंने क्या कि विशाल एक And then बैल he के रूप धारण किया, manifested a big सांड का रूप धारण किया, ox form, you know, ox, विशाल शरीर था। but big, like gigantic और ox, उसके वो जब चलने लगे giant देखो ox. चारों तरफ And then when हवा he थी, was just by his walk, all the wind was coming so strong, like gush of wind. Whenever he used to walk, this demon, the gush of wind was so strong that it was like a hurricane. पेड़ों के पत्ता जैसे उसके पीछे पीछे लुढ़कते रहते। You know, even बोले इतना बस विशाल उनके शरीर था। so his body was so gigantic that from the gush of the wind when he used to walk, so this is like it was like a hurricane. It was even uprooting trees and etc. सांड का है। अच्छा, तब सारे ब्रजवासी लोग देख करके डर गए। Because all the Vrajavasis saw him and they were ब्रजवासी afraid. लोग क्या करते हैं? ब्रजवासी लोग क्या करते हैं? What the Vrajavasis they do? I told. और क्या They not call the Vrajavasis don't call for the help of Kali Maiya or anyone. Vrajavasis they only call for the help of Krishna. Kanaya, Kanaya, protect us. And ने क्या की? Kanaya, what did he do? और उस असुर को जो है अति सहज में उसको Very easily Kanaya killed that उसको demon. दो टांग पकड़ करके ऐसे Took his घुमाने लगे। Krishna took his two legs, like two hind legs, and just moved him like spinning him in this like up, and then Krishna just threw him, and then like Krishna killed him very easily. कृष्ण और वृषभासुर के मारने के बाद, वो सांड के मारने के बाद After killing Aristasur, सखियों के पास आए Krishna came to the gopis, near the gopis, सखियां थी। Radha, Lalita, Vishaka, and they told, Kanaya, stay far from us. Why? Oh, because you killed a cow. गोवध You've killed a cow, Kanaya. कन्हैया बोले कहाँ? मैं Kanaya said, what? I killed a cow? Oh, Aristasur. He was a demon, Krishna बोले told. उसुर था वो Gopi said, whatever, but the body was of a cow, all right? कि नहीं है? Wasn't it? सही बात है। Yeah, this is true. Huh? So, हाँ, शरीर तो ऐसे ही था उसके, जैसे आपके शरीर स्त्री शरीर होता just like, for example, you are in the body of a woman or a man. आत्मा तो दिखाई नहीं पड़ रहे, आपके शरीर दिखाई पड़ रहे। We cannot see the soul, right? Only the bodies. So, तो उसी प्रकार गोपियां in the same way, the gopis were saying, कहने लगी देखो तुमने oh, Krishna, you killed the cow. किया ही नहीं। Krishna said, it was a demon. हैं? बोले नहीं नहीं, गोपियां मानने के तैयार नहीं है। The gopis were not ready to accept. अच्छा बोले अच्छा क्या की जाए? Okay, what should I do then? गोपियां बोले एक काम करो, The gopis said, okay, do one thing. सब तीर्थ में जाकर के स्नान करो। You should bathe in all the tirthas. सरस्वती, कावेरी, Ganga, नर्मदा, Jamuna, ताप्ती, Saraswati, जितने भी Kaveri, पुण्य all नदियां the हैं, pure rivers, तीर्थ आदि है। the pure rivers, you should just take bath. कृष्ण बोले इतना दूर हमें जाना पड़ेगा ब्रज छोड़ करके। Krishna said, वृंदावन पुलिस जम पास में को न कुछ। I'll leave Vraj to go to these places. No, I'll not leave Vraj to go anywhere. गोपाल ने क्या की? देखो अपने बंसी के द्वारा So Gopal with his flutes, देखो एक सुंदर कुंड हो गया। he manifested a beautiful kunda. हैं? और देखो जो खोद दिया उसमें पानी है ही नहीं। But there was no water in the kunda, in this hole. And then Krishna just remember all the tirthas, and then समस्त पुण्य नदियां आकर के अपने अपने रूप धारण करके all the rivers they came, manifesting their forms and saying, I'm the Ganga. And the water of the Ganges came. I'm the Kaveri. क्या बोले? ताप्ती, नर्मदा, I'm the Tapti, Narmada, all the pure rivers of India, all of them. सब में एक एक नाम करके They just presented, like introduced themselves, कहा से गोपियां बोले जाए कि नहीं? and they came to the kunda of Krishna. And Krishna Kanaya took a bath. Okay, now I'm purified. तुम लोग भी हमारे कान में स्नान करो। Krishna told, bathe with me. But Radha and the gopis, they told, तुम तो गोवध किया, you've killed गोवध करने a के cow, बाद तुम्हारे शरीर की हवा and हमारे शरीर में आ गया, हम लोग भी पवित्र हो। the wind coming from your body also touches
also touched our body. So also we are also impure. So, but we will not take bath in your kunda. They told, not in हम your अपने lake. बनाते हैं। We will make our own देखो राधा जी kunda. ने क्या की, So Shrimati Radhika, अपने she, हाथों के कंगन है ना, with the bangles from बालाजी her hands, उसके द्वारा ही बना दिया, she created कुंडा that बना दिया। kunda. इसके उसके लिए अंदर में है कौन कुंड, इसको क्या कहा जाता है, कंगन कुंड कहा जाता है। That's जब why हम in लोग the ये middle of Radha संस्कार हुआ था Kunda, ना, there is the Kandan Kunda. That's why when they do the samskara, means like the cleaning of Radha Kunda, you can see. आज से I think बताई तो रहते हैं, किंतु आज से 30 sometimes, 30 maybe 30 साल पहले or 35 years राधा कुंड में ago, जब पहली बार they for the first time they did the samskara. पानी को This उठा करके सारे कीचड़ they took all the water of Radha Kunda, taking all the mud out. They make a big cleaning of Radha Kunda. We went there with Gurudeva. We saw, सब उठाया, and also we helped cleaning the उसके Radha नीचे Kunda. ऐसे कुंड ऐसे है, And बिल्कुल in the middle, like under all that water, in the middle there, in the base, at the base, there is जो है गोला है, गोल a circle, like a round shape. और उससे पानी कभी सूखता नहीं। And like in the middle, under all that water, there's like at the base of the tank, let's say like that, there is a circle, like a round shape, and it's always coming water from that thing, from that middle, always. Okay? सारे पानी को उठा दिया, Even if we have taken, वो पानी कहाँ पता नहीं, पता even if we took all the water out from the Radhakunda, still that place, it's coming water from there, ऐसे ऐसे आ रहा naturally. आज उसके कारण है, और उससे पानी कभी सूखता नहीं। The water सारे never पानी को dries. उठा दिया, We even took away all the वो water, पानी but still कहाँ water is से coming. पताल से ऐसे ऐसे आ रहा It's coming like from the earth, it's coming like है। that. उसके कहा जाता है कौन सा कुंड, So that kunda is called कंगन कुंड। Kandan. Sorry, I don't know perfect Hindi word. Kandan That's Kunda. right. It's like the means the bangles, Bengal Kunda, because Shrimati Radhika had her bangles, and with her bangles they did the Kunda. So this is true. तो अभी तो पानी है ही नहीं, So, है? but the Kunda, continuing the Lila, the Kunda was empty, and Krishna told, "Take water from my Kunda." Then Gopi said, "No. कम है क्या? Do you think we are less than you, inferior to you? You think the men are more powerful than women, and women are अरे अच्छा क्या weaker? No." सब कृष्ण बोले, Gopi told, श्रीमती राधिका Shrimati बोले, Radhika told, सबसे के चलो हम लोग "Oh सब friends, let's go मानसी गंगा में to the जाए Manasi और Ganga, everyone. कलश भर Let's करके go, let us go, and let's bring water in pots." सारी सखियां जो है So all the Sakhis, राधा जी के साथ कलसी लेकर के चल पड़े। they went to इतने Shrimati समय Radhika, सारे जो है and then तीर्थ जो है all the Tirthas रास्ते में लेट गए, सत्याग्रह कर दिया, in a personified shape, रास्ते में form, they just came. लेट गई, They came in, they completely obstructed blocked the way of Shrimati Radhika, falling on the ground in the middle of the path she was going, blocking her way, falling on the ground, जाओ जाओ, हैं? like so that she could not cross and not go anywhere. क्या करने लगे, राधा की स्तुति करने So they started praying to Shrimati Radhika, all the Tirthas. तिलकौस्तुकहारिणी प्रसन्न वक्त्र पंकजे निकुंज भूविलासिनी ब्रजेंद्र भानु नंदिनी ब्रजेंद्र सूनु संगते कदा करे ससियमां कृपा कटाक्ष सारे राधा जी की स्तुति आदि करने लगे। So they started praying to Shrimati Radhika. कांचनम गौरवा कीर्तनांचिताब्द गंध कीर्ति निंदी सौरवा। अच्छा देखो राधा जी की स्तुति आदि करने लगे, राधा जी प्रसन्न हो, And Shrimati Radhika became pleased. हे राधे, Hey Radhe, सब तीर्थ आदि करने, हे राधे, the Tirthas was saying, Hey Radhe, स्वीकार करें, please accept our service. Then Shrimati Radhika said, okay. उस समय सारे तीर्थ जो आदि जो है Then all the अपने Tirthas, करके they पानी identified themselves, and they came inside the Radha Kunda as like a water shape. पानी नहीं लोगे, हैं? Krishna is nothing less कृष्ण ने क्या की अपने like, भक्तों के oh, द्वारा let's make these waters meet. So with his flute, Krishna created like a channel उसमें क्या कर दिया, between Radhakunda and Shamakunda. और कृष्ण कुंड के So the पानी राधा Sangam Sthan is the junction place between Radhakunda and Shamakunda. So Krishna with his flute, he made like a hole, like a channel there, and then the water was coming from one kunda to the other. The both of the waters of the two kundas mixed. Bala Vrindavana Bihari Lal. So until nowadays when we go to take a bath, when we go to take a bath, actually where should we bathe? राधा कुंड में कहाँ पर, जहाँ In Radha Kunda, where? Not anywhere.
next to the Sangam Kunda. Sorry, Sangam Stan. So we should bathe in the Radhakunda where? Next to the Sangam Stan. Means we should bathe in the Radhakunda next to the place where Radhakunda meets Shamakunda. ऐसा इधर राधा कुंड में स्नान करो, So, संगम कुंड के पास संगम जो है ना, so first you take bath in Radhakunda, it's in this side. उसके पास इधर स्नान करो, And then पहले कहाँ स्नान करना चाहिए? first you should bathe where? At Radhakunda and in Radhakunda. Then you bathe in Krishna Kunda, Shamakunda. आज तक भी So until nowadays, प्राकट्य दिवस माना जाता है। अभी हो गई ना बहुलाष्टमी so in the day of Bahulastami, it's like the day where the Radhakunda manifested. हाँ, 2-4 दिन पहले It was 2 or 4 days ago. वृंदावन में। At that time we were in Vrindavan. हाँ, तो ये राधा कुंड है। बोलो राधा रानी की जय, है बोलो महाप्रसाद की। हाँ, प्रसाद सबको दे दो। Give the prasad to everyone. Do arati of Thakurji first. ठाकुर जी के कहाँ प्रसाद कहाँ खिलाओ? And then where you feed the prasadam to everyone? On the roof? अच्छा चलो, है हाँ, हमारे अभी तो भागवत सप्ताह है ना, हमारे तो Now I have to go Bhagavad Saptaha still.